हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक स्मार्ट लर्नर्स। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना। लास्ट वीडियो में हम पार्ट 1 कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन्ड मिल जाएगा, आप पहले उसे जाके चेक कर लेना। नाउ लेट्स बिगिन आवर वीडियो। In this video, I am sharing with you daily use words in English with Hindi, which will enable you to speak English fluently. If you want to speak English flawlessly, you must remember these phrases. All the phrases have been given with Hindi meaning and examples in English and Hindi. So, number 8, it times I feel, or you can say it times I think, or sometimes I feel, or you can say sometimes I think. कभी कभी मुझे लगता है. It times I feel, it times I think, or sometimes I feel, or sometimes I think. Examples: all times I feel happy and content with my life. कभी कभी मुझे अपने जीवन में खुश और संतुष्टि का एहसास होता है. Number 9, avenge oneself. बदला लेना. Avenge oneself. Examples: he sought to avenge himself against those who had wronged him. उसने उन लोगों के खिलाफ बदला लेने का प्रयास किया जिन्होंने उसे अन्याय पहुंचाया था. He sought to avenge himself against those who had wronged him. Our second example, she was determined to avenge herself for the betrayal she had experienced. उसे उस विश्वासघात के लिए बदला लेने का निर्धारित था जिसे उसने महसूस किया था. She was determined to avenge herself for the betrayal she has experienced. Number 10, believe on hearsay. सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना. Examples: many people tend to believe on hearsay without verifying the facts. कई लोग तथ्यों की पुष्टि न करके अफवाहों पर विश्वास करने का परिवर्तन रखते हैं. Second example, it is not wise to believe solely on hearsay. केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है. Moving to our next words, come across failures or get failures. असफलताएं मिलना. Examples: it is common to come across failures on the path to success. सफलता की राह में असफलताओं का सामना करना सामान्य है. It is common to come across failures on the path to success. Our next example, despite coming across failures, he never gave up and continued striving towards his goals. असफलताओं का सामना करने के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहा. Moving to our next word, come what may, or you can say no matter what, or we can even say loss, toss or cross, or come rain or shine. चाहे जो भी हो जाए, ये इसका हिंदी मीनिंग है. And let me repeat this once more time. Come what may, or you can say no matter what, loss, toss or cross, come rain or shine. So here are some examples of these words. Examples: number 1, I am determined to pursue my dreams come what may. मैं अपने सपनों को पुरस्कार करने के लिए दूरदृढ़ता से निर्धारित हूँ, चाहे जो भी हो. I am determined to pursue my dreams come what may. Our second example, we will stand by each other come what may. We will stand by each other come what may. Alright, that's for today's video. For now, keep practicing, keep learning, and don't forget to like this video, subscribe to our channel for more lessons, and hit the notification bell so you will stay updated. Until next time, happy learning and expressing.